गई जो कि मेरे चाचा की दुकान है। आपके पक्षकार के ऊपर तो भारतीय फिल्मों का काफी प्रभाव है। चाय में नींद की गोली भी मिला दी। What my summation is, this aspect has not come in. जाकर फिल्म वर्ल्ड में जाकर अपना भविष्य देखना चाहिए भाई। At present he is 21 years old and behind bars. अभी यंग लोग ही तो हीरो बनते हैं। But as per the case of the prosecution, the father of the victim lodged a missing report stating that her 14 years and 6 months old girl has went missing. Subsequently, after a span of 3 days, she was recovered with the under the custody of the present applicant. And there are 2 other applicants who helped these 2 persons to elope. If and those have already been granted the benefit of bail. I am the main accused. If my lord would appreciate the 164 statement that she has stated. Prosecutrix examined हो गई कोर्ट में? No, my lord, sir. I am also on the ground of delay, my lords, because I am behind bars for the last 10.5 months, my lord, and till date, for the last order sheet that I have produced, my lord, only charges have been framed. Not a single witness has been examined. Yes. My lords would appreciate the 164 statement, my lord. Please, page number. My lords, that is चालान का पेज नंबर, my lords. चालान का नहीं, आपने फाइल किए क्या इसमें? फाइल नहीं किया चालान। पढ़िए चलिए। 8 महीने पहले मेरी सूरज साहू जो मेरे घर के पास में रहता है से स्नैपचैट पर मुलाकात हुई थी। मेरा सूरज के साथ मेल जोल बढ़ा, जिसके पश्चात सूरज ने मुझसे प्रपोज किया। वो प्रपोज मैंने अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया है। मैं 15 वर्ष की हूँ। सूरज ने मुझसे शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा था। बोला था कि रात को अपनी मम्मी पापा को चाय में नींद की गोली मिला देना और मुझसे मिलने आना। नींद की गोली मुझे सूरज ने दी थी। माह दिसंबर 2021 संडे का दिन था। मैंने अपने माता पिता को चाय की नींद की गोली मिला दी। जब मम्मी पापा सो गए तब मैं सूरज से मिलने विद्या पुस्तक भंडार गई जो कि मेरे चाचा की दुकान है। आपके पक्षकार के ऊपर तो भारतीय फिल्मों का काफी प्रभाव है। चाय में नींद की गोली भी मिला दी। What my summation is, this aspect has not come in the 161 statement. On a lighter side, Lord, I admit. Lighter side. But उनको तो कहीं और जाकर फिल्म वर्ल्ड में जाकर अपना भविष्य देखना चाहिए भाई। At present he is 21 years old and behind bars. अभी यंग लोग ही तो हीरो बनते हैं। But वो उस स्कोप के लिए मतलब बेल मिलनी पड़ेगी, अदरवाइज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। Not jail. Lord, so this aspect has not come on record in the 161 statement. Lord. It is a subsequent improvement in 164 statement. And looking to the conduct of the girl itself, Lord, she was well aware of the gravity as well as the consequences that she left. 15 साल की लड़की का कंसेंट मान ली जाएगी। Lord, either you prove that she was a major, और 15 साल की लड़की का आपने फोन किया, माता पिता के खाने में नींद की गोली मिलवाई और फिर उसको बुलवा लिया और उसके बाद में ये सब हुआ जिसके कारण 363, 376 ये सब हो गया, 366 पॉक्सो एक्ट, तो इसमें लड़की की कंसेंट मान ली जाएगी। What my summation is, technically she is a 15 years old, my lord, but looking to the conduct of the girl, my lord, she was well aware of the consequences, my lord, and so what my contention would be that the applicant is also 21 years old, my lord. It is not the case that he is more than 30 years or something. वो केवल उसका इतना गुनाह है कि my lord वो, और what my contention, it was the girl who called him. And he is already behind. और ये चीज चाय की मैं गोली वाले पार्ट 161 में आया ही नहीं है, 164 में पहली बार आया। And she was with him for the span of 3 days. No resistance was made on the part of the girl. फिर वही बात आती है 15 साल की लड़की की कंसेंट आ जाएगी क्या? That is the point, but yes. My only contention would be to look into the conduct of the girl, my lord. My lord would be pleased enough to consider. And till date, my lord only चाहते हैं कि my lord, if my lord are not inclined, not at all inclined. But after statements of prosecutor. Shri Pravesh Navedia, after arguing for some time, prays for withdrawal of the second bail application on behalf of applicant Suraj Sahu with liberty to renew prayer after prosecutrix is examined before the court of